Hi friends, let's continue with CA Foundation May 26 RTP. As we are going through series, मतलब हम टुकड़े टुकड़े में RTP सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप पार्ट वाइज रिवाइज कर सको और पूरी RTP एक साथ देखने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन रिवाइज चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 3, that is the third session of RTP May 2026. We'll start with depreciation and amortization. Now, a firm purchased a second-hand machinery on 1st April 2023 for 30 lakhs. कितने में खरीदा? 30 lakhs. Subsequent to which 4 lakh was spent on his repairs and installation. मतलब इन शॉर्ट मशीनरी कितने में पड़ा? 30 लाख के 34 लाख. द आंसर इज 34 lakhs on October 1st 2023. मतलब उसी साल में. Another machinery was purchased for 18 lakh and the cost of installing the machine in a new plant was 40,000. उसी साल में 1 अक्टूबर में हमने और एक मशीनरी खरीदा 18 लाख का एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पेड 40,000. सो टोटल इज 18 lakh 40,000. Okay, so what will be the entry for machinery purchase? Machinery account debit to bank account. The firm also shifted the machinery purchase on 1st April 2023. मतलब ये मशीन जो खरीदा था, the firm shifted to new plant, means a new location and incurred freight of 20,000 and loading charges of 30,000. So this is a mandatory process इसको बोलते हैं, जिसको शिफ्टिंग चार्ज और लेबर चार्ज लगे. तो दिस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड. ये तो रेगुलर खर्चे, हम लोग सिर्फ मशीनरी का कॉस्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं. तो these both are revenue expenditures. So this should be totally ignored. They adopted a policy of charging depreciation at 12% per annum on diminishing balance. Diminishing balance means WDV method, reducing balance method, or diminishing balance method. So, in this method, depreciation is charged on the original cost in year number 1. फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं और सब्सिक्वेंट ईयर्स मतलब आने वाले सालों में ऑन द बैलेंस वी चार्ज डेप्रिसिएशन. ऑन 1st April 2025 means 23 24 24 20 after completion of 2 years it was decided to change the method and the rate of depreciation to straight line. So basically ये सम आया है चेंज ऑफ मेथड का from WDV to SLN. On this date means on 1st April 2025 the remaining useful life was assessed at 5 years. मतलब 1st April 2025 से जो भी assets हमने खरीदे थे उसकी बची हुई लाइफ कितनी assess की उन्होंने? 5 years for both the machines purchased with no scrap value. और उनकी कोई scrap value होगी नहीं. On 1st October 2025 मतलब जिस साल में चेंज किया उस साल में 6 महीने बाद, अप्रैल टू सितंबर खत्म होने के बाद, the first machine became outdated. जो पहला मशीन था वो खराब हो गया एंड वो सोल्ड फॉर 5 लाख. तो एक सेल की वर्किंग नोट आएगी. ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 17 लाख. और उसी दिन एक नया मशीनरी भी खरीदा फॉर 17 lakhs. उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 years. और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 60,000. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2026. अब पूरा क्वेश्चन वापस क्लियर करता हूँ. सो 23 24 24 25 and 25 26 they are expecting machinery account for this year. तो हम लोग को इन 2 साल के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे एंड टू कम टू बैलेंस एज ऑन 1/4/25. मतलब हमें मशीनरी का बैलेंस ढूंढना पड़ेगा पहले. वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द मशीनरी एज ऑन 1/4/2025 एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो बेसिकली दिस सम इज ऑल अबाउट देयर आर 2 machines purchased in 2023. After that they shifted first plant to another plant and incurred some expenses which has to be ignored. Then from 1st April 2025 they change the method of depreciation from WDV to straight line method, and the useful life of the 2 machines which were bought will be only 5 years with no scrap value. उन्होंने पहला मशीन बेच दिया. कितने में बेच दिया? 5 लाख. और उसी दिन उन्होंने और एक मशीन खरीदा है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 60,000 है और उसकी यूजफुल लाइफ 10 years है. ये है पूरे सम की स्टोरी. और उन्होंने मशीनरी अकाउंट पूछा है फॉर द ईयर एंड 31st March 2026. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, ये दोनों मशीन जो खरीदे 23 में उसकी WDV उसका बैलेंस निकालेंगे 2 साल के बाद. तो लेट्स गो टू द वर्किंग गाइस. दिस इज वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल. फर्स्ट मशीन 30 lakhs, उस पे इंस्टॉलेशन चार्जेस 4 लाख, तो 34 lakhs हो गया. नाउ 34 लाख इनटू आई थिंक 12% डेप्रिसिएशन. तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन 4 लाख 8,000, 34 लाख का 12%. अनदर मशीन वी परचेज for 18 lakh and we incurred 40,000 as installation charges, तो 18 lakh 40. So इन दोनों की एंट्री कर लेते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. पर इनकी एंट्री तो करेंगे कब? 23 24 में. हमको कौन से ईयर का अकाउंट पूछा? 25 26. तो ये 2 मशीन खरीद के हो गए. मैं ना पहला मशीन पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ. 34 लाख इंटू 12% 4 लाख 8,000 माइनस इक्वल टू करेंगे तो फर्स्ट ईयर का बैलेंस आ जाएगा, दैट इज 31/3/2024 इंटू 12% सिंस दे आर फॉलोइंग WDV 3,59,040 माइनस इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 26,32,960. दिस इज द बैलेंस ऑन 31st March 2025 व्हिच इज नथिंग बट 1st April 2025. जिस साल का मुझे अकाउंट बनाना है उस साल का ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट मशीन का मिल गया 26,32,960.
Now second machine was purchased for 18 lakh and 40,000 spent on installation, so 1840. But bhulna mat guys, don't forget this was purchased on 1st October 2023. So in that year 18 lakh 40 into 12% into 6 divided by 12 will be the depreciation. That comes to 1 lakh 10,400 minus 18 lakh 40,000. So we'll get 17 lakh 29,600. WDV as on 31st March 2024 into 12%, 2 lakh 7,552 minus equal to will give you 15 lakh 22,048. So you have got the balances of both machines as on 31st March 2025, or we can say 1 for 2025. First machine ki WDV 26,32,960. Here it is. Second machine 15 lakh 22,048. The sum total of both is 26,32,960. 41 lakh 55,008. Now ये बैलेंस पे आ गए. Now, this is on 1/4/25. In the same year, on 1st October 2025, I purchased one machinery worth 17 lakh. So, machinery account debit to bank. तो मैंने सारे purchase के transactions कर लिए. Now, let's go back to the question. So, this paragraph gets over. This is also over. Here, they decided to change the method of depreciation from WDV to straight line. And remaining useful life was reassessed as 5 years with no scrap value. ये था. और उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को फर्स्ट मशीन बेच दिया 5 लाख का, और उसी दिन एक नया मशीन खरीदा जो हमने कर लिया. एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज 10 इयर्स ऑफ द न्यू मशीन. द यूजफुल लाइफ ऑफ द न्यू मशीन व्हिच वाज परचेज्ड, दैट इज 17, उसका लाइफ 10 इयर्स था और उसकी स्क्रैप वैल्यू 60,000 थी. फाइन. नाउ व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल सेल द असेट. फर्स्ट मशीन बेचा है ना, तो उसकी वर्किंग कर लेते हैं. तो उसकी WDV क्या थी? 26,32,960. ये वाली इसको हमने 1 अक्टूबर 2025 को बेचा है. So 26,32,960. Now don't forget we have changed the method from WDV to SLM. So सारे मशीन की यूजफुल लाइफ की क्या थी? जो बचे हुए मशीन थे उसकी यूजफुल लाइफ क्या थी? 5 साल. तो डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2, 2,63,296 डेप्रिसिएशन होना चाहिए. अभी ऐसा क्यों किया गाइस, मैं आपको समझाता हूँ. 26,32,960. From this year we are supposed to follow SLM. So useful life was 5 years. So 26,32,960 divided by 5. That comes to 5,26,500. ये full year का डेप्रिसिएशन, लेकिन ये हमने 1 अक्टूबर को ही बेच दिया, तो डिवाइड बाय 2. So that comes to 2,63,296. This is the depreciation. Minus 26,32,960. So this is WDV on the date of sale. मतलब 1 अक्टूबर 2025 को ये मशीन की WDV 23,69,664 rupees, and which was sold for 5 lakh. So what is the loss on sale? 18,69,664 rupees. इस मशीन को बेचा गया. What should be the journal entry that I should pass? Bank account debit, loss account debit to machinery. So in the machinery account credit side, bank account debit, loss account debit, depreciation also debit to machinery. Bank account debit, loss account debit, depreciation account debit to machinery. We are supposed to record 3 things: the selling price, the depreciation on the asset sold, and the profit or loss. So this is the selling price, this is the depreciation on the machine sold, and this is the profit or loss on sale. तो एक मशीन, 2 मशीन पड़े थे, उसमें एक मशीन बिक गया, एक मशीन पड़ा है और दूसरा मशीन खरीदा गया. So now what we are supposed to do after doing the sale transaction? We are supposed to calculate the balance depreciation. जो बचे हुए मशीन थे उसका depreciation निकालना है. तो मेरे पास एक पुराना मशीन था जिसकी WDV 15,22,048, and the remaining life is 5 years. So depreciation will come to 3,04,410, and minus equal to 3,04,410 minus 15,22,048. So this is the balance of the second machine which was purchased in the past. तो ये एक depreciation आया, और जो दूसरा मशीन खरीदा हमने 17 lakhs का. Now 17 lakh, the new machine purchased in 1st October 2025, less scrap value 60,000 divided by useful life 10 years. So 17 lakh minus 60,000 divided by useful life 10 years. 1,64,000 is the depreciation, but divided by 2 क्योंकि वो 1st October को खरीदा था, into 6/12. So 82,000 is the depreciation of the new machine. Here it is, and 3,04,410. So total depreciation comes to 3,86,410. So guys, यहाँ पे हमने क्या किया है? 2 मशीन पास्ट में खरीदे थे, उसका बैलेंस निकाला. देन न्यू मशीन खरीदा, उसकी एंट्री की. देन व्हाट वी डिड, वी चेंज द मेथड फ्रॉम WDV to SLM, and the first machine was sold. So we found out the selling price,
the depreciation and the loss or profit whatever happened on sale. We recorded that and then we calculate the balance depreciation. बैलेंस डिप्रिसिएशन हमने किस पे निकाला, तो कि जो एक पुराना मशीन नंबर 2 बचा था वो और एक नया मशीन खरीदा, और ये आपका बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये आपका डिप्रिसिएशन का सम था जो काफी इजी पूछा था। दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स गाइस, यू कैन इजीली ग्रैब दिस 10 मार्क्स। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दैट विल बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट विल बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछी जाती है। ऑन 1 जनवरी 2025, लेट्स रीड इट। तमल ड्रॉस 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 16,000, 25,000 एंड 10,000। तो तमल कौन हुआ? ड्रॉवर। उसे कितने बिल्स ड्रॉ किए? 3 बिल्स ड्रॉ किए। फाइन। नाउ आई ऑलवेज कीप अ हैबिट, first I'll decide who is the drawer and who is the drawing, and then I'll read the last line of the problem कि in whose books entries are asked. I repeat, सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, और मैं लास्ट लाइन में जाके डिसाइड करूंगा किसकी बुक में एंट्री है। You show journal entries in the books of Tamal. Okay, so ड्रॉवर की बुक में एंट्रीज करनी है गाइस। Let's start guys. Okay, now so Tamal is the drawer. He draws 3 bills. So I'll give numbering. मैं हमेशा नंबरिंग करता हूँ जनरल एंट्री वाले कोई भी चैप्टर तो नंबरिंग करता हूँ। नंबरिंग मतलब क्या, एंट्री नंबर 1 ये आएगी, 2 ये आएगी, 3 आएगी, 4 ये आएगी। इससे काम बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड्स। तो लेट्स सी, नंबर 1 drawn slash accepted, मतलब D slash A means drawn slash accepted. Number 2, the first bill of exchange was for 16,000 for 2 months. Second bill and third bill of exchange of 25 and 10,000 for 3 months. So second bill is for 3 months and third also for 3 months. These bills are accepted by Tapas. So he is the drawing. He is the drawer. Tamal is the drawer. Tapas is the drawing. On 4th March 2025, Tapas requests Tamal to renew the first bill. So second step आएगा renewal. पहला bill renewal पे जा रहा है। Renewal का मतलब drawee is not able to make the payment of the bill to the drawer. तो renewal. Renewal में मैंने 4 steps define किए। Dishonor. Those who have studied my lectures or attended my lectures, they know dishonor, interest, part payment, and the new bill. 4 steps: dishonor, interest, part payment, new bill. So shortcut which I have created is DIPIN, DIPN. D for dishonor, I for interest, P for part payment, N for new bill. Fine. Okay. So 5 entries दिख रही है। On 4th March, Tapas requests Tamal to renew the first bill with interest of 15% per annum for period of 2 months. ये सब मैं एंट्रीज करते वक्त डिस्कस करूंगा। मेरे रिन्यूअल आते ही 4 स्टेप लिख देता हूं मैं पहले। Tamal agreed to this proposal on 25th March 2025. Tapas retires the acceptance for the second bill for 25,000, the interest discount being 250, and third bill of 10,000, the interest rebate that is discount being 100. इन शॉर्ट फर्स्ट बिल रिन्यूअल में गया और बाकी दोनों बिल रिटायर हो गए। तो आई विल राइट एंट्री नंबर 6 रिटायर एंड इवन एंट्री नंबर 7 रिटायर। मैं दोनों सेपरेट एंट्रीज पास करूंगा, दैट इज फॉर बिल नंबर 2 एंड बिल नंबर 3। ओके, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, जो बिल रिन्यू किया था उसके बाद तापस बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 30 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ओके, सो द बिल व्हिच गॉट रिन्यूड गॉट इंसॉल्वेंट, सब्सिक्वेंटली इंसॉल्वेंट। ये बिल नंबर 3 था। नाउ एंट्री नंबर 8 dishonor, so I have to cancel the renewed bill, and entry number 5 insolvency. So in short I have 9 entries to pass. मैंने नंबरिंग क्यों किया मैं आपको बोल देता हूँ। नंबरिंग से एक स्टूडेंट का माइंडसेट सेट हो जाता है कि मुझे कितनी एंट्रीज करनी है और मुझे कौन से सीक्वेंस में एंट्रीज करनी है। आई होप पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव रिटन हियर। नाउ let's clear this everything and I have the steps ready. I'll go as per the steps. Now I'll just underline Tapas. Okay, so guys, everyone, first entry, bill drawn and accepted, that will be on 1st January 2025. Bills receivable account debit to Tapas account. In fact, I'll say bill receivable 1 account debit, bill receivable 2 account debit, bill receivable 3 account debit to Tapas account. Let's check whether we have that in the answer. Here we will have the answer. Yes, bill receivable 1 account debit, bill receivable 2 account debit, bill receivable 3 account debit, that's 16,000, 25,000, 10,000 and 51,000 being bill drawn for 2 months and 3 months respectively. Number 2, that is the first bill goes for renewal. So there are 4 steps for renewal: dishonor, interest, part payment, new bill. Dishonor, we are the drawer. हम हमेशा किससे पैसे रिकवर करेंगे? ड्रॉई से। And who is the drawing? Tapas. And the bill हमारे पास ही पड़ा है, bill is retained by us. So the entry will be Tapas account debit to bill receivable 1 account.
तापस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल वन अकाउंट, ईयर मार्च 4 पे डेट होगी और ये रही एंट्री एंड 16,000 वाज द बिल अमाउंट बीइंग रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड. Okay, then interest. Now, obviously, if drawee does not make the payment of the bill on the due date, drawer will charge interest to the drawee for making late payment. अब time लोगे तो थोड़ा interest के साथ भरना पड़ेगा. So okay, so let's calculate interest. पहला बिल कितने का था? 16,000. What is the rate of interest they have given? 15%. And how many months he renewed the new bill? For a period of 2 months. So into 2 by 12. Let's calculate 16,000 into 15% into 2 by 12. This comes to 400 rupees interest. मैं तापस को इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो तापस से रिसीवेबल है तो तापस अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट इज माय इनकम. सो तापस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट and that will be again on 4th March 2025. So I'll pass a separate entry tapas to interest. I don't like to mix up. This will be 400 and 400 being interest charged, and then I'll pass one more entry March 4. So this is my entry number 2. Sorry, entry number 2. This is my entry number 1. Again, 1 second, I'll write properly. This is my entry number 2. This is my entry number 3. This is my entry number 4. Interest done. So there is no part payment coming in the question. So मैं ये step cancel कर दूंगा. Normally renewal we have 4 steps: dishonor, interest, part payment and new bill. Since here no part payment has been made by Tapas, so we'll skip that step. So dishonor done, interest done, and now new bill drawn. That will be bill receivable 4 number because 3 numbers already given. So bill receivable 4 account debit to Tapas, and that will be 16,400. I'll pass entry here. Bills receivable number 4 account debit to Tapas account, and that will be bill plus interest 16,400 16,400 being new bill drawn for 2 months. Now this is done. So my steps done, 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 done. Next, what is happening next? Retirement of bill. The second and the third bill are subsequently retired on which date? 25th of March. यहाँ लिखा है guys, 25th of March. Second and third bill gets retired. Second bill was of 25,000 and we gave him a discount of 250. So I'll pass separate entries. Entry number 4 done. Entry number 5. They have passed a combined entry. I can pass a separate entry also. Okay, I'll pass here. Entry number 5. Bank account debit. Rebate account debit. You can write rebate account, discount also, but rebate more preferable. To bills receivable. Which bill got retired? Number 2 account. Bill number 2 was for how many months? Bill number 2 first of all amount 25,000 and 250 is the discount. 25,000, 250. So 25,000 minus 250. 24,750 I'll get. Being bill retired before the due date. This is entry number 5 guys. Now let's see. This is done. Again one more retirement. I'll say again the same entry. Where I'll pass entry here. Entry number 6 or 7. Let me check. 6th entry. Bank account debit. Rebate account debit to bill receivable number 3 account. Third bill getting retired. Third bill amount was 10,000. Retired at a discount of 500. So 9,500 is the balancing figure. Okay. Entry number 6 also done. We can check with them. So we have bank 9,500 here for the third bill, and we have bank here of 24,750. So total comes to 34,250. You can check this. Discount total 750, 500 plus 250. You will receive both bills. I hope this is very clear. So I'll go as per my steps. You can follow my steps, guys. You can score 100 marks. Full 100% marks in the chapter. Now, last what happened? The bill which was renewed,
got insolvent. So insolvency, there are two steps. One is dishonor and one is insolvency. Again, dishonor means I have to cancel the renewed bill. So again, I have to receive money from whom? Tapas. So entry will be Tapas account debit to bills receivable number 4 account. 16,400. Now, when did the bill got renewed? 4th March plus 2 months. 4th May plus 3 days grace. So the date comes to 7th May. That's why 7th May is given here. Fine. And then he gave some amount, he did not give some amount. That is insolvency. He gave only 30 paisa means 30%. So the entry will be bank account debit, bad debts account debit to Tapas account. Here. Here they have again separated the entry. So no need to separate bank account debit, bad debts account debit to Tapas. The bill amount was the bill amount was 16,400. So 16,400 here. 16,400 into 30%, which I'll get 4,920, which is correct. And balancing there will be bad debts. 11,480. Being 30% of the amount received as full and final settlement. So this was depreciation and bills of exchange for you guys. You can revise the RTP in parts so that it doesn't create a burden on you. Revise the chapter, revise the RTP sum, and take the utmost benefit. Thank you.